Assalamu alaikum dear students. After reading the chapter It's Country for Me, today we are going first for summary and then we will be going towards question answer. So let's start our summary. Written by Patricia Demuth is an extract it's a part from her book Joel Growing Up a Farm Man, which is the genuine true picture of an American rural life. तो आपका ये जो लेसन है Patricia Demuth की बुक से लिया गया सिर्फ एक पार्ट है, मतलब उसने पूरी बुक लिखी है but this is one of the part. In this lesson the authoress Patricia Demuth wants to highlight the satisfaction, hard work and passion of country people for their work and their land. तो गांव के लोगों की अपनी देहाती जिंदगी के साथ जो मोहब्बत होती है उसको शो किया उसने. She narrates us the story of Joel, a young boy of 13 years. He is a student in grade 8 at a public school in Scales Mound. The writer has described Joel's life, feeling and his zeal for work, for farm and country life. Joel has been living on a 245-acre land which was bought by his great-grandfather James Holland. Besides studying in private school, Joel helps his father and brother at the farm. He likes farming very much and spends most of his time in barn. He works for hours daily, yet also entertains himself with outdoor games. Joel is the youngest of all 6 children of Ed and Betty. He has 4 brothers and 1 sister. He has learned all the farming skills by observing, watching and listening to his father and brothers. तो अपने बाबा से और बहन भाइयों से उसने फार्मिंग के जितने भी स्किल्स हैं वो सीखे. Joel doesn't want to leave the country at any cost. मतलब वो किसी कीमत पर गांव को छोड़ना नहीं चाहता. Farming is his heritage and passion, and that is why he says, if I have a favorite place to live on, it's a country for me. तो ये देहात ही मेरे लिए बेस्ट प्लेस होगी रहने के लिए अगर मुझे चॉइस दिया जाए कि मैं कहीं रहूं. Now let's have a look on question number 1 is that analyze the text of It's Country for Me and give one example of fact and opinion each. अपनी राइटिंग में कभी फैक्ट्स और कभी ओपिनियन दोनों का सहारा लेते हैं लिखते हुए. हम देखते हैं कि इट्स कंट्री फॉर मी में जो है क्या फैक्ट्स और कौन सी ओपिनियंस हैं पैट्रिशिया डेमथ की. सो फैक्ट रेफर्स टू द ट्रूथ दैट रियली एग्जिस्ट और समबडी व्हिच अकर्ड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. या तो वो बात हो चुकी होती है, हिस्टोरिकली प्रूव्ड होती है, या फिर वो कहीं ना कहीं उसका वजूद होता है, लाइक यू कैन टेस्टिफाई इट और प्रूव कर सकते हैं उसको, तो ये फैक्ट होता है. ऑन द कॉन्ट्ररी ओपिनियन इज अ व्यू और जजमेंट अबाउट समथिंग not necessarily based on fact or knowledge. जबकि इसके बरअक्स जो है वो ओपिनियन जो होता है वो एक जजमेंट होती है, आपकी कोई राय होती है, कोई अंदाज़ा, कोई गेस होता है, और जो कि एक फैक्चुअल नॉलेज नहीं होता, रियलिटी बेस्ड नहीं होता. तो इन द टेक्स्ट ऑफ इट्स कंट्री फॉर मी सेंटेंसेस लाइक जोल अटेंड्स पब्लिक स्कूल इन स्केल्स माउंड. देखिए ये फैक्चुअल सेंटेंस है क्योंकि वो वाकई स्कूल अटेंड करता है. जेम्स हॉलैंड फार्म इज नियर स्केल्स माउंड एंड दैट जेम्स हॉलैंड जोल्स ग्रेट ग्रैंडफादर बॉट दिस फार्म इन 1860 आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स. ये तमाम जुमले फैक्ट्स के हैं. while the sentences like anything to be plowing instead, जब जोल की बहन कहती है कि मैं सारा कुछ छोड़ दूंगी प्लोइंग के लिए, तो ये दिस इज हर पर्सनल ओपिनियन. अब ये ओपिनियन है. एंड इफ आई हैड जस्ट वन वर्ड टू डिस्क्राइब जोल इट वुड बी इंथुजियाज्म आर बेस्ड एन ओपिनियन. ये बेटी जो उसकी मदर हैं जोल्स की, उसके रिमार्क्स हैं, उसका ओपिनियन है अबाउट हर सन. क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ कोहेरेंस एंड कोहेजन इज अचीव्ड इन द एसे इट्स कंट्री फॉर मी, इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल from the text. तो आपने ना सिर्फ इसको डिफाइन करना है कि कोहेरेंस और कोहेजन है क्या चीज़, बल्कि आपने इट्स कंट्री फॉर मी में से एग्जाम्पल भी देनी है. सो द आंसर इज गोइंग टू बी अ बिट लेंथी. सो कोहेजन कंसर्न द फ्लो ऑफ सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ फ्रॉम वन टू अनदर. बेसिकली दोनों एक ही चीज़ें हैं. कोहेरेंस एंड कोहेजन सोल पर्पस जो इसका है वो ये है कि पैराग्राफ और आइडियाज़ की कनेक्टिविटी लाई जाए. थोड़ा सा फ़र्क जो है वो कोहेरेंस का ये है कि ग्रामेटिकली भी उसको देखा जाता है एंड थ्रू रिपीटिशन कई और ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके जरिए वो कोहेरेंस लाते हैं. सो द राइटर प्रोवाइड्स कोहेजन इन देयर राइटिंग बाय यूजिंग कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब वो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू के साथ स्टिक रहेंगे, अपनी डाइवर्जन नहीं करेंगे, कोई और पॉइंट उसको डिस्कस नहीं करेंगे. वी सी दैट पैट्रिशिया डेमथ इन द लेसन स्टार्ट्स विद द कंट्री लाइफ एंड टिल द एंड शी गोज ऑन विद जोल्स टफ वर्क्स एज अ फार्मर व्हिच मेंटेन्स कोहेरेंस इन हर एसे एंड आल्सो हेल्प्स द रीडर टू फॉलो एंड स्टिक टू द मेन आइडिया. तो हमने देखा कि शुरू से ही वो कंट्री लाइफ की बात कर रही हैं टिल द एंड, जो हमें हेल्प करता है कि हम मेन आइडिया के साथ स्टिक रहें
और कहीं इधर उधर ना जाएं. So this mean it is a cohesion. Coherence is achieved when sentences and idea are connected and flow together through logical connectors. तो इसमें हम जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं उसको लॉजिकल कनेक्टर्स को यूज करते हैं ताकि फ्लो जो है स्टोरी का वो सेम रहे. और इसके अलावा बहुत सारी और भी ट्रिक्स हैं कोहेरेंस लाने के लिए. जैसे हम आगे देखें, मैंने डिस्कस किया द राइटर यूजेस रिपीटेटिव फ्रेज और वर्ड्स टू ब्रिंग कोहेरेंस. तो कोहेरेंस के लिए सबसे ज्यादा जो मेन चीज है वो है रिपीटिशन. बार बार किसी जुमले की सेंटेंस फ्रेज की रिपीटिशन करके ऑथर आपको मेन आइडिया के साथ स्टिक रखता है और इधर उधर जाने नहीं देता. सो पैट्रिशिया डेमुथ कॉन्स्टेंटली यूजेस सेंटेंसेस लाइक फार्मिंग इज जोल्स वर्ल्ड एंड फार्मिंग इज जोल्स हेरिटेज एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ. मोर the detail about farming life which relates every paragraph to the previous one and bring cohesion and coherence. तो हर पैराग्राफ में जो फार्मिंग के मुतालिक बात है उसी के हिस्से हैं. कभी वो फार्मर्स की स्किल बयान करती हैं, कभी फार्म के बारे में बयान करती हैं वगैरह वगैरह. तो ये सारी चीज़ें एक ऐसे में कोहेरेंस लाती हैं और आपको अपने सब्जेक्ट से, अपने टॉपिक से डेविएट होने नहीं देती, इधर उधर नहीं जाने देती. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, explain the significance of the title It's Country for Me and its connection to the theme of the lesson. हमारे पास जो टाइटल है It's Country for Me, इसकी अहमियत क्या है और आप इसको कनेक्ट कैसे करते हैं इस ऐसे के साथ. So as Patricia Demuth writes about the rural life and the love of farmers to their land, and that is why the title is most apt one, means suitable one, appropriate one. चूँकि बात जो है वो रूरल लाइफ की हो रही है, देहाती ज़िंदगी की, और वो शुरू से लेकर आखिर तक यही बोलती है, तो इसलिए जो उसका टाइटल है कि ये देहात ही मेरे लिए वो सारी जगह है, तो ये परफेक्ट जो है टाइटल है. Patricia in her essay throws light not only on the lives of farmer but also shows their passion and love for farming life. As Joel is the epitome of hard working and dignity of labor, he signifies the main theme of the essay very appropriately. तो epitome mean वो हिम्मत और मेहनत की जो है एक खुली मिसाल है. He signifies the main theme of the essay very appropriately. और वो जो मेन थीम है इस essay का It's Country for Me, इसको पूरी तरह से वो रिप्रेजेंट करता है. If he has to select a place for living, he will prefer the country life as his love for rural life is on extreme. क्योंकि गांव के लिए उसकी जो मोहब्बत है बहुत ज़्यादा है, सो इसलिए वो कहता है कि मैं इसी देहात में रहना पसंद करूँगा. Thus the title of the lesson is a significant one which is directly connected to the theme. तो अगर हम देखें इस लिहाज से It's Country for Me इसके थीम के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है. Question number 4 is describes Joel treatment of Lambie and Jessica and small dog. What does it shows? तो जोल का लैम्बी है और जेसिका जो उसका डॉग है उसके साथ बिहेवियर क्या शो करता है. Joel's attitude towards Lambie and Jessica shows his extreme love towards his profession and ambition to become a farmer. It shows how accustomed these animals are with Joel. I mean आदि होना, customs. The animals also show love in response. वो भी उससे प्यार करते हैं. His love and treatment shows how skillful he is in his own field, that is farming. तो ये शो करता है कि वो कितना skillful है, कितना माहिर किसान है. It also shows he is an expert farmer who knows how to take good care of these animals and to shelter them. कैसे उनकी हिफाजत करनी है और कैसे उनको रखना है, ये सारा वो जानता है. Question number 5 is compare and contrast your daily routine with that of Joel's. How would you rate the motivational level of your doing work with that of Joel? तो जोल का जो काम करता है और आप जो काम करते हैं कैसे रेट करेंगे उसके मोटिवेशनल लेवल को. I consider that Joel's motivational level is extraordinarily elevated, mean it's a high one. तो आप देखते हैं कि जोल चूँकि बहुत ज़्यादा काम करता है, so the way he works for family earnings, obeys his parents, takes good care of animals available for everybody's help, and gather knowledge from each and every direction shows the high motivational level on his part. Being a city child, I don't think so that I have such a busy and tough routine. Rather, I live a very comfortable life with fewer responsibility. आप अपना opinion लिख रहे हैं कि मैं चूँकि सिटी का बच्चा हूँ और बहुत कम responsibilities है मेरी. So this Joel's daily routine is totally different from mine. Question number 6 is what skills one is required to learn if he wants to be a full-fledged farmer. एक पूरा मुकम्मल किसान बनने के लिए बंदे के पास कौन कौन सी महारतें होनी चाहिए. So farmers family
family is different from the other families because each and everyone has to work hard for the earning of the family. Knowing all the skills of farming are not only important but essential. अच्छा, तो फार्मर्स की जो फैमिली है वो आम फैमिली से डिफरेंट होती है. उनके लिए ये सारे जो महारतें हैं वो जानना बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे कामों से वास्ता पड़ता है. सो इफ़ वन वांट्स टू बी अ फुल फ्लेज फार्मर लाइक जोल, वन मस्ट हैव मैनी स्किल्स लाइक ड्राइविंग हैवी व्हीकल्स. तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जैसे ट्रैक्टर वगैरह जो है उनको चलाना आता हो, एंड रिपेयरिंग दैम. ही हैज़ टू बी अ हस्बैंडमैन, मीन मुख्तलिफ फसलों को कैसे काश्त करते हैं. एग्रीकल्चरलिस्ट, नोइंग हाउ टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स. वेटेरिनेरियन, एज टू टेंड सिक एनिमल्स, बीमार जो जानवर है उसकी देखभाल कर सकते हैं. मैकेनिक एंड बिजनेसमैन. क्वेश्चन नंबर 7 इज इन व्हाट वे डज जोल प्ले द रोल ऑफ एडल्ट. वो एक बालिग आदमी की तरह कैसे काम करता है. जोल इज एन एंथुसियास्टिक टीनेजर हु वर्क्स लाइक एन एडल्ट. बिल्कुल बड़े आदमियों की तरह काम करता है टू हेल्प हिज फैमिली अर्न मनी. ही इज नॉट ओनली अ गुड स्टूडेंट बट अ skillful and hardworking farmer. The daily chores Joel does are heavy and hard. He feeds animal, goes to barn 10 times a day, drives heavy vehicles, and is ready to take care of animals anytime. He, like a responsible person, performs highly tiresome works and contributes to the family well-being. Thus, Joel entirely plays the role of an adult. Mean completely वो एक adult का role अदा करता है. Okay, after the question answer we come towards the exercise on page number 54. You have to put suitable vocabulary in these blanks. You are asked to search for the following words related to space science and astronomy in authentic source and then write the correct word in front of its meaning below. So words हैं आपके पास: orbit, dock, launch, countdown, lift off, manned and splashdown, gravity, etc. So number 1 is the beginning of space flight. This is called launch. Number 2 is attach self to another space vehicle. This is called dock, D-O-C-K. Number 3 is counting to 0 before launch. This is called countdown, जिसे आप कहते हैं 10, 9, 8, 7, mean descending order में. Number 4 is going around planet. This is called orbit. अजराम फल्की हैं, ये अपने मदार में घूमते हैं. This is called orbit. Number 5 is the force that all celestial bodies have. This is called gravity, जो ज़मीन की कशिश से सकल होती है. Number 6 is when the space vehicle leaves the surface. This is called lift off. Number 7 is using astronaut, not computers or animals. जिस भी स्पेस मिशन में मैन से निकला है, मीन ह्यूमन बींग्स उसमें होते हैं और वो जाते हैं स्पेसशिप पे. सो दिस इज कॉल्ड मैन मिशन. नंबर 8 इज लैंडिंग इन द सी, कॉल्ड स्प्लैश डाउन. वैसे भी आप पानी में कोई चीज़ फेंकते हैं तो स्प्लैशिंग साउंड वाटर के लिए यूज होता है, तो इसी से कनेक्टेड है दैट स्प्लैश डाउन यहाँ पे यूज होगा. आगे हमारे पास है जी ग्रामर. फिल इन दी आर्टिकल्स ए एंड और द वेयर नेसेसरी. इफ नॉट necessary, you can put cross in that blank. So number 1 is I like the blue t-shirt over there better than the red one. Both दोनों का आप स्पेसिफाई कर रहे हैं. नंबर 2, their car does 150 miles an hour. H जो है वो वॉल नहीं है. वॉल से पहले हम बेसिकली एन लगाते हैं बिकॉज एच की जो साउंड है वो वॉल की है, अ साउंड है आ रही है हमारे पास, एच साइलेंट आ रहा है. दैट इज वाई वी आर यूजिंग एन. Where's the USB driver I lent you? मीन मैं स्पेसिफिकली उस USB ड्राइवर के बारे में पूछ रही हूँ जो मैंने आपको दिया. Number 4 is do you still live in Bristol? Bristol already proper noun, no need to use article. Is your mother working in an old office building? Again O is vowel. Number 6, Afsha's father work as an electrician. E is vowel. Number 7, the tomatoes are 30 a kilo, means per kg. Each kg is 30 rupees per kilo. Number 8 is what do you usually have for breakfast? So we don't use the before meals. Number 9 is Hashir has a terrible headache. Number 10 is after this tour you have the whole afternoon free to explore the city. Exercise number B is that fill in the blanks with the definite articles the if needed. Put an X if not needed. My grandmother likes flowers very much. So यहाँ पे कोई article नहीं लगेगा because flowers are used in general. और plural countable noun से पहले जब उनको generally इस्तेमाल किया जाता है हम कोई article use नहीं करते. So I love the flowers in your gardens. Now we specified the flower.
इसलिए हम द का यूज़ करेंगे. नंबर 3 इज सी यू ऑन वेंसडे. वेंसडे ऑलरेडी प्रॉपर नाउन. Zuhaib goes to work by bus because not a specific bus. Don't be late for school because not specific school. Listen, Kashif is playing the trumpet, so before musical instrument we use the. Number 7 is we often see our cousin over Eid. Eid is proper noun. Number 8 is she has never been to Nathia Gali, again proper noun, and we can't use indefinite article the. Number 9 is what about going to Karachi in February? February again proper noun. So hope students you solved the exercise. को definite indefinite article और इसके usage की भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी. Keep learning, stay tuned and subscribe the channel if you didn't yet. Thanks for watching my video.